Okay, so Workmen Compensation Act. So, Workmen Compensation Act, as name indicates, कि we have done or there is some fault in the system or there is some flaws in the system on the basis of which we need to compensate or whatever the mistakes have been done, we need to reevaluate the process or reevaluate the thing and work accordingly. So that is the Workmen Compensation Act. Okay. So, the Workmen Compensation Act 1923 aims to provide the workmen or their dependents some relief in cases of accident arises out of and in course of employment and causes either death or disablement of the workman. So, for example, आप किसी फैक्ट्री साइट पे काम कर रहे हैं या किसी भी लोकेशन पे काम कर रहे हैं, whenever you are working into any setup. And due to XYZ reason, if any one of employees get injured or any trauma happens, in that scenario, what we need to do is we need to give this workman compensation. Due to that accident, that person may be injured, maybe he loses or certain part of his body. That is, I can say, disablement happens to the workman, and usually and maybe in the worst condition it causes the death of that particular person. So every organization has their own policies and norms related to the Workmen Compensation Act. Some people offer the job to the dependent, some offers certain amount of money for that reason. So depending upon if what kind of act that company or that organization has, on the basis of that act does not apply to the members of armed force of the union and those who are insured under the Employment State Insurance Act 1948. ओके. सो उसके अलावा आपका मैंने बोला कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन compensation rules and regulations. Other than that, the people who are not covered under this is your armed force people who are working into military services basically, of the union, and those who are insured under Employment Insurance Act 1948. The coverage of this act is also cook employed in hotels and restaurants. So I told you, basically not related to the, if I talk the compensation act is related to industries only. So it doesn't indicate ki, it's only indicated to, working sites or any industry like thermal power plants or construction sites. Other than this is also applied on the people who are working into the restaurants, okay, or hotels. So, so any hospitality services, hospital, आपका hospital department हो गया, आपका ये hotel services हो गया, restaurant services हो गए. Other than this, your this I can say flights and all, सब में vary करता है compensation है depending upon कि what kind of rules and regulations are. Okay. So definition section: commissioner, dependent, employer, disablement, wages, and workmen. These are the basic definitions we need to understand. Okay. So dependent is one who is the relative of decrease. Decrease मतलब the dead person. Decreased workman, जैसे कि उसकी wife हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं. Anyone will be considered under this. A widow, a minor legitimate or adopted son, unmarried or legitimate adopted daughters, a widow's mother. Okay, so ये इतने people can be dependent. Okay, if wholly dependent on earning of a woman at a time of his death, a son or a daughter who is attained the age of 18 years, who is infirm. Okay, अगर कोई फीमेल वर्कर का डेथ कर जाता है तो उस कंडीशन में उसकी जो डॉटर होगी और जो सन होगा उसको हम कवरेज देते हैं. ओके. And any of the following who is particularly dependent on the workman at the time of death, और इनमें से कोई सा भी जो ऊपर मेंशन है
at the time, जो इधर mentioned है at the time of death, a widower, a parent and other than a widower's mother, minor illegitimate son, मतलब आपका जो भी मतलब सन होगा, डॉटर होगा, ठीक है, अनमैरिड इलेगिमेटेड डॉटर एंड डॉटर लेगिमेटेड और इलेगिमेटेड और adopted if married or a minor if widow or minor, ठीक है। तो दीज पीपल, मतलब अगर डॉटर भी है, वो विडो है, वो माइनर है, लेगिमेटेड है, इलेगिमेटेड है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ओके। अ ब्रदर और अनमैरिड सिस्टर और अ विडो सिस्टर इफ अ माइनर, अगर माइनर है और विडो है सिस्टर, तो उसको भी और ब्रदर को भी कंसिडर किया जा सकता है अगर वो माइनर है, मतलब 18 ईयर्स की एज से नीचे है। अ विडो डॉटर इन लॉ, आपकी डॉटर इन लॉ है, वो विडो है, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अ माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिक्रीज सन्स, डॉटर और नो पेरेंट ऑफ द चाइल्ड इज अलाइव। सो अगर कोई भी चाइल्ड है, उसका कोई फादर मदर नहीं है और वो आपकी फैमिली में पल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका सन का आपका ग्रैंड सन हो गया, ओके, सो इन दैट सिनेरियो आल्सो इट विल बी considered, okay, whether it's from son side or whether it's from daughter side, okay, and a parental grandparent if the parents of the workman is alive, okay, so अगर उसके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा है तो उनको भी कवरेज मिल सकती है, ओके। एम्प्लॉयर सेक्शन 21E के अकॉर्डिंग जो है, एम्प्लॉयर इंक्लूड्स अ पर्सन और अ बॉडी, is in small setup it is always referred to a person, but in larger setup if I talk about it, always a body related, the body of person, whether incorporate or not, okay. So it is always, employer is a group of person or a person who gives jobs, or basically I can say job, okay. A managing agent of an employer. So for example, employer, maybe it's always not directly that. For example, I'm working for XYZ organization. The leading or the owner name is uh, Rohit Shetty, for example, or Rohit. Okay, and directly that person is not handling, the HR or the management team on the behalf of that person is taking care of my expenses or my things. So that person will also, any managing person or agent of employer will also become employer at that time. For example, organization issue the employment or the job certificate, but the person who is handling this is HR department or managing department or administrative department. So in that scenario, they will also become somehow employer, okay, department, okay, or the legal representative of a decreased employer. For example, that owner is decreased or death. So whoever is the legal representative will also become. For example, I want to give my past to my father, give my powers of that particular organization to my sister, whosoever is, he or she will become the employer in that scenario. A person whom service of workmen are temporarily lent or let on hire. Okay. So whatever the person is, for example, जो आपको lent, जैसे थर्ड पार्टी पेरोल पे होता है, ओके, सो आपको वो हायर तो XYZ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा है, बट हम हायर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, तो जो थर्ड पार्टी है दैट विल बिकम योर एम्प्लॉयर एट दैट टाइम, ओके। Workman means any person who is, for example, who is working, a railway servant is defined in a clause 34 of a section 2, a Railway Act 1982, not a permanently employed in any administrative district subdivision office of a railway and not employed in any capacity as is specified in schedule 2, okay. So it means कि वर्कमैन हु मे बी वर्कमैन, जो ऑफिसर लेवल पे एम्प्लॉयड ना हो, लोअर लेवल पे एम्प्लॉयड हो, जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, इनमें अगर कोई एम्प्लॉयड है तो वो वर्कमैन में नहीं आएगा। सब डिविजन ऑफिस में कोई हेड पोस्ट पे एम्प्लॉयड है और वो भी नहीं आएगा, ओके। द पीपल हु आर वर्किंग एज मास्टर्स, एज seamen and crew members of a ship, these will come under your workman category, okay, the lower categories, okay. It does not include the person whose employment is of casual nature. Means casual nature means not
permanent is a temporary state or casual peace if you employed someone. Okay, a captain and other members of crew on aircraft. Okay, they will covered under this category. A person required as a driver, helper, with mechanic, cleaner, or any other capacity in connection with a motor vehicle. Okay, a person required for work abroad by company as it mentioned in schedule 2. So for example, you can see a lot of countries due to cheap labor they had the people from India. So those people who are going in bulk from India to other country to perform certain basic skills over there, they will consider as a workman. Okay. So the person to be treated as workman, there must be contract of employment. There must be relationship of master and servant between the employer and employee. The employment is for the purpose of employer's trade or business. Okay, so these are the basic nature. If I talk about who all will be considered under a uh, workman. Okay, so there must be, if someone is working for me, so he will be somehow, I will be the master because I'm paying that person for their whatever the work they are performing into my organization. So I will be the master and they will be servant for me. Okay, so the person must treat as workmen. There must be a contract of employment. Okay. So whenever we are employing someone, there must be the contract of employment. That person should work for us under that contract. Okay. Employer's liability to pay compensation. Now we have understand what is the basic definitions right now. Who is workman? Who is employer? Who is employment? All these things we have studied. Now we are going to see what is the act basically. Till now, any doubts, any queries? Now you need to know few things other than this. Okay, the workman compensation X. I told you ki dependent or someone who is you know decreased to death or disablement. Other than this, the act imposed statutory liability upon the employees to provide the payment to the employee when they suffer from any kind of physical disability, disease. Okay, so not always that person should lose any. If there is certain kind of disease condition also, in that scenario also, this employment act work, but the conditions will vary. Okay, so you need to know certain things. See, it is extended into whole of the India. This act will be applicable all over the India. The Workmen Compensation Act 1923, and it came in force on the first day of July 1924. Okay, so these are the two basic things which you need to know. Okay, uh, now we need to understand what is the general principles. Okay, so there must be a causal connection between the accident, injury of accident, and the work done in course of employment. Okay, and the ounce upon the application to show that it was the work and the result strain which contribute the aggravated the injury. For example, false claim नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपको इंजरी जो है घर पे लगी और आप आके ऑफिशियली क्लेम कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो ऑन साइट इंजरी लगी. नहीं, यू नीड टू प्रूव दैट पॉइंट कि इतना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा एंड दिस काइंड ऑफ इंजरी हैपन, so that will be applicable. Okay, it is not necessary that workman must actually work at same time of his death, or that death must occur while he is working or had creased, had just ceased to work.
So it's not always necessary. I told you कि every policy has a different norms. Okay, for example, आप working, आपका सर्विस पीरियड में भी आप घर पे भी डिक्रीज कर गए या इन कैंपस डिक्रीज हुआ, इन ऑफिस कैंपस डिक्रीज हुआ. सो इट्स नॉट ऑलवेज कि आप काम करेंगे और ऑन साइट होंगे तभी these things. No, the every organization has their own policy norms, but generally हम certain amount of चीजों को cover up करते हैं. Okay. So applicability of act kahan ka hai? So act extended whole of the India except which all states? Except the states and union territories of Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Daman and Diu and Lakshadweep. These are the places where this act is not applicable, and the act applies to the workers employed in capacity specific in Schedule 2 of Act, which includes factories, mines, plantations, mechanically propelled vehicle construction work, and certain hazardous occupation and specified categories of railway servants. Okay, तो रेलवे के हर एक उसमें नहीं लगेगा, certain specified में ही ये एक्ट लगता है. Under the Act, the state governments are empowered to appoint the Commission of Workmen Compensation to the settlement of the dispute. The major purpose, if I talk about कि आप इस act के अंदर क्या करते हैं, major purpose of act is I generally talk about. So first thing is कि we do the settlement of disputed claims. For example, dispute है कि और employer कुछ कह रहा है, employment कुछ कह रहा है. So this, the courtroom, what he used to do basically, there is a governing body, the set of people they sit and take a decision. Ki what is the exact dispute and how we are going to settle it down. Okay, and disposal of cases, injury involving the deaths, cases we used to do. Then the periodic revision of the payments basically under this act. Okay. So Empowerment Act of State Government, जैसे आप देखते हैं 7th पे कमीशन चल रहा है, then हो सकता है 6th पे कमीशन. So how these happens depending upon कि okay market prices कितना चल रहा है, inflation कितना है, on the basis of that हम ये सारी चीजें भी आपका payment commission per day everything will be checked and accordingly, updated time to time by these organizations. Okay, so these are the main provision and scopes of the act. Okay, now I have told you basically the definitions of dependent employer, disablement. So I missed the two definition, that is your commissioner. So commissioner means the workman compensation appointed under section. The commissioner means a person or a body who is appointed under section 20. That is state government may by notification in the official gazette appointed any person to be the commissioner of the workman compensation for such area may be specified in the notification. Okay, so these are basically appointed by the government side and they provide you the notice for that. Okay, any commissioners may for the purpose of deciding any matters refer to him. For example, I want to give any particular case to that commissioner, he will come and do his job. Okay, and decision under his act on the basis of that particular act, he will choose one or more person possessing a specific knowledge. For example, might be I'm from healthcare department, but the case is from another department. So I will choose another person. I will request the government officials. I need an expert who is experienced into this kind of injuries or something. So they will come and help me out related matter under the inquiry, and on the basis of that we will take the decision. Okay. Now, employer definition I have already explained you. Disablement I already explained you is a loss. Any kind of loss or capacity of work uh, or move. For example, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है? And that work, there is a loss in hearing or loss in that particular work affected you so much, कि you cannot earn whatever the basic payment is, your capacity has been
reduce. For example, you lose a certain part, you loses your hearing ability, you suffer from respiratory tract infection or disease condition. So all these things will be come under this. Okay, and disablement has no different types. If I talk about there, maybe that disablement maybe a permanent, maybe a partial, maybe a temporary. Okay, so these are the basic uh, total हो सकता है या तो totally that person if हम किसी भी for example कोई severe injury हो गई and in that scenario in order to save that person we cut their hands like that is a total disablement. Okay, कि वो अपना एक particular hand को lose करते हैं वो total disablement है. Partial means कि for example thumb है ठीक है और वो fracture हो गया विद इन द सर्टेन आप फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स के अंडर हॉस्पिटल में आए डिटैच हो गया हम उसको रीजॉइन करवा दें. ओके, तुरंत ग्राफ्टिंग करके रीजॉइन करवा दें दैट इज अ पार्शियल. ओके, टेम्पररी मीन्स कि फॉर टाइम बिंग हुआ फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया कोई mental illness हो गया that will be temporary because you will be counseled you will be given proper treatment and it will be cured. And permanent is like you loses your hearing ability. You loses that person. That is a permanent. Okay. So now last is your wages. Wages includes a privilege or benefit which is capable of being estimated in money. Okay, wages is what? Why we are working, why you are working, or why anyone is working for the purpose of money because we want to earn money. Okay, so that money is our wages. Okay, so includes any privilege or benefit which is capable of being estimated in money. For example, आप कोई काम कर रहे हैं उसके basis पे your skill, whatever skill you have on the basis of that skill you earn money na so that will be considered as a wages. Okay, other than traveling concession or contribution paid by the employer. So for example, इसमें आपका traveling का नहीं हम include करते हैं. उसके अलावा other allowance will be considered under your wages. आपका जो daily him, okay, paid by the employer to the workman towards a pension or a provident fund or some paid to the workman to cover any special expenses entailed to him by the nature of his employment. Okay, सो वेजेस आपका जो भी वर्क कर रहे हैं उसके लिए जो आपको पेमेंट मिलता है उसको हम वेजेस कहते हैं. ओके, वर्कमैन वी हैव कंसिडर्ड, एम्प्लॉयमेंट वी हैव कंसिडर्ड. ओके, so these are the basic things which we know about related to the employment act कि आपका basic definition क्या क्या हो सकता है. ओके, now coming to this employment liability under commission 3. Okay, so क्या क्या आपकी liabilities होती है. For example, the following condition must be necessarily satisfied under the qualify of compensation. He must be the workman within the meaning of this act. जो भी act मैंने बताया उसके according वो एक workman होना चाहिए. The personal injury must have been caused by accident. वो भी आपका accident से जो भी injury हो तो accident से for example मैंने आपको बताया कि घर पे आप कुछ कर रहे हैं और उसकी वजह से injury हो गया और आप आके claim कर रहे हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आपका कवर्ड होता है बट कुछ में नहीं तो वो एक्ट टू एक्ट और टू कंपनी डिपेंड करता है. ओके, द इंजरी मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय एक्सीडेंट. द एक्सीडेंट मस्ट बी अराइज आउट एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप एम्प्लॉयमेंट सर्टेन ऑफिसर्स क्या कवर करते हैं कि ऑन साइट एक्सीडेंट्स को ही सिर्फ कवर करते हैं. सर्टेन एक्सीडेंट्स जो है वो आपका ओवरऑल जैसे आप घर पे भी हैं कुछ हो गया अच्छे ऑर्गेनाइजेशन तो वो उसको भी कवर अप कर देते हैं. ओके, the injury caused by the accident must have resulted in workman's death or permanent total disability or temporary disability. अब उस इंजरी से उस पर्सन को या तो जो है डेथ हो जाए वर्कमैन का और या फिर उसको परमानेंट और टोटल डिसेबिलिटी हो जाए या टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो जाए. ओके, एक्सीडेंट अराइजिंग आउट एंड इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. अब क्या होगा आपका कि एक्सीडेंट अराइज हो
आउट और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनके बेसिस पे the employer is liable to pay the compensation in case of personal injury and occupational diseases. Okay. So आपका if I talk about related to occupational diseases, तो आपके ये occupational diseases पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 3 में आपको मिलेगा, पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 3 में मिलेगा एंड पार्ट सी ऑफ शेड्यूल 3 में मिलेगा. ओके. So these are the certain things we need to check that list later on. Okay. So the personal injury includes the physical, mental strain, shock, or caused by excitement. So I told you कि आपका जब मैं बता रही थी कि पार्शियल और टेम्परेरी का बता रही थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि टेम्परेरी में क्या हो सकता है आपको मेंटल इंजरीज जो भी आती हैं आपकी, जो भी आपका डिप्रेशन है, एंजाइटी है, शॉक है, ये सब आपका जो है टेम्पररी में आता है, बिकॉज इसको हम काउंसलिंग करके मेडिकेशन देके पेशेंट को वापस से क्योर कर सकते हैं अगर कोई मेंटल इंजरी है. फ्रैक्चर वैक्चर भी आपका टेम्पररी इंजरीज में ही आएगा. ओके. द इंसिडेंट to his employment or injured then arises out of. So these are the basic out of employment. So for example conditions for receiving the compensation for personal injury, जैसे मैंने आपको बताया कि personal injury हो गई, उस केसेस में क्या होगा? The three tests of for determining whether an accident arose out of employment. अब हम तीन टेस्ट करेंगे कि जो भी एक्सीडेंट हुआ है, पर्सनल इंजरी हुई है, वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुई है कि नहीं. एट द टाइम ऑफ इंजरी द वर्कमैन मस्ट बी एंगेज इन बिजनेस ऑफ द एम्प्लॉयर. तो मैंने आपको पहले ही बोला कि हर ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा नहीं होता, बट बेसिकली अगर आप पर्सनल इंजरी का क्लेम करते हैं, तो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि आपको ऑन ड्यूटी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि घर पे इंजरी लगी और आप जाके क्लेम करें कि ऑफिस में लगी, नहीं. दैट इज कि आप जब उसका कोई उससे रिलेटेड ऑफिस रिलेटेड कोई काम करें एट दैट टाइम मस्ट नॉट बी डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल बेनिफिट. ओके. आप अपने घर पे कुछ पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करें और उस टाइम पे इंजरी लगी, वो नहीं कवर होती है यूजुअली. ओके. that accident occurs at the place where he was performing his duties. Okay, so second thing भी वही explain कर रहा है कि जो भी accident है, particular accident, वो कहाँ occur होना चाहिए? जब आप अपनी duties को perform कर रहे हैं. Injury must have resulted from some risk incidental to the duties of service or inherent in the nature or condition of employee. Okay, so injury कहाँ result होना चाहिए? Some risk incident और आपका ड्यूटी ऑफ सर्विस पे. ओके. और इनहेरिट इन नेचर और कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जाम्पल द वर्कमैन हु इज वर्किंग इनटू द माइनिंग इंडस्ट्रीज, उनको क्या होता है, आप एस्बेस्टोसिस में माइनिंग इंडस्ट्री या एस्बेस्टोसिस में काम करें, यूजुअली वी सी दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम देयर रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन. वहां पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन या उनको ये सब बहुत कॉमन होता है माइनिंग इंडस्ट्रीज में. एस्बेस्टोसिस हो गया, सिलिकोसिस हो गया, ये सब व्हाई दिस इज बिकॉज वो चीज को इनहेल कर रहा है एंड दैट रिजल्टेड इनटू दीस काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन. सो ये आपका वर्क्स रिलेटेड इंजरीज में कवर्ड होगा एंड यू कैन क्लेम अकॉर्डिंगली. ओके. सो doctrine of notation extension, if I talk about the expression in the course of employment, cannot or not only actually work but also other engagement natures and necessarily there to reasonably extended both as regard of work hours and workplace. तो आपका वर्किंग आवर्स में होना चाहिए, वर्किंग प्लेस पे होना चाहिए एंड इट रेफर्स द टाइम ड्यूरिंग विच एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज. ओके. तो आपका ऐसा नहीं हो कि आप 6 बजे के बाद ऑफिस आवर्स के बाद क्लेम करें, नहीं. दैट विल बी नॉट कवर्ड. ओके. However, this is this subject to the theory of notation extension of the employer's permission, so as to include an area which the workman passes or repasses in going and in leaving the actual place of work. Okay. तो अदर देन दिस और क्या इंक्लूड कर सकता है कि जैसे वहां से पास कर रहा हो या रीपास कर रहा, जैसे ऑफिस जा रहा हो, आ रहा हो, और
उसके नियर बाय कुछ हो या आने जाने में कुछ हो, दैट विल ऑल्सो इंक्लूड इट. There may be some reasonable extension in both time phase. The workman may regard as in the course of his employment, even though he has not reached and his uh, left his employer's permission. Okay. So अगर आप टाइम के बाहर हैं और ऑफिस नहीं पहुंचते हैं और ऑफिस प्रेमिसेस लीव कर चुके हैं, इन दैट सिनेरियो अगर कोई रीजनेबल पॉइंट होगा या रीजनेबल कंडीशन होगा तो भी हम कंसिडर कर सकते हैं. ओके. So also this is also called the doctrine of notion extension. The doctrine of notion extension could not be placed in strain jacket. It is merely the matter of sound, common sense, when and where and what to extend, and this doctrine could be applied. So ऐसा नहीं कि हम कुछ भी एप्लीकेबल करके कुछ भी करके उसको क्लेम नहीं. Doctorate or doctrine means कि there is something that is very superior or very supine or very specialized form of. तो इस एक्ट के अंडर जो भी स्पेसिफिक कंडीशन लाई करिए अगर उसको फुलफिल कर रहे हैं तो वी विल कंसिडर दैट केसेस. अगर नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो वी विल नॉट कंसिडर दोस केसेस. ओके. So these are the basic things. So it must be resulted from some risk incident, service, or inherent in the nature of employment. At the time of injury, the worker must be engaged into the business of employer and must not be doing something for his personal advantages. Already we have discussed. Okay. So doctrine of notation, I have already explained you different things. Okay. Now, extension of employment on the basis of it means the employer provides the employee with a particular conveyance to and from the place of employment. And the employee is regarded as a course of employment even though he has not reached or he has left the employer's premises. For example, अगर मैं कोई vehicle दे रही हूँ, ठीक है, I'm providing a charter service or shutter service to that person or a pick up and drop facility. In that scenario, if something happens, that will also covered because वो आपका कंसिडरेशन में हो गया पर्टिकुलर कन्वेंस में अगर वो फिर भी आ जा रहा है तो भी. ओके. केसेस हैरिस वर्सेस एसोसिएटेड पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड का केस एक देख लीजिए. लक्ष्मी भाई वर्सेस चेयरमैन ट्रस्टीज बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का एक केस है. एंड डेनिस वर्सेस वाइट नोटेशन एक्सटेंशन एम्प्लॉयमेंट. सो दीज आर द डिफरेंट केसेस यू कैन गो थ्रू एंड चेक. ओके. फॉर द डिटेल स्टडी. ओके. Disablement means the reduction in the earning capacity. It may be partial or total disablement. Partial disablement में आपके अगेन टू कैटेगरीज आ गए. टेम्पररी पार्शियली डिसेबलमेंट हो गया और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया. एंड नाउ टोटल डिसेबलमेंट में टेम्पररी एंड परमानेंट फिर टू कैटेगरीज हो गए. ओके. So temporary or partial disablement means that the reduces the earning capacity of a workman in the employment and which was engaged at the time of accident. Okay. तो वहां पे आपका टेम्परेरी होगा कि मतलब अर्निंग कैपेसिटी को सर्टेन हद तक उसने इफेक्ट किया. परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट मींस दैट रिड्यूसेस फॉर ऑल टाइमर. ओके. आपका एनी जो भी उसकी कैपेसिटी थी वो ऑल टाइम अर्निंग को इफेक्ट कर देगी. टोटल डिसेबलमेंट मींस whether of a temporary or permanent nature, which incapacitates a workman for all work which he was capable of performing at the time of incident. Okay. Calculation of compensations. In case of death, the amount of compensation is equal to 50% of the monthly wages into the relevant factors, 80,000 or even more. Okay. Permanent में क्या होता है 60% of the total wages into the relevant factors, oblique 90,000 or which is even more. और आपका permanent disablement में क्या होगा, amount of compensation is equal to 60% of monthly wages into relevant factors. और temporary में आपका
25% ऑफ मंथली वेजेस का। ये आपका कैलकुलेट हम ऐसे करते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एम्प्लॉयज आर नॉट लाइबल ऑफ, तो एम्प्लॉयज किन किन चीजों के लिए लाइबल नहीं होते? The injury does not result into the disablement for the period exceeding the 3 days. तो आपका कोई इंजरी हुआ 3 days के बाद कुछ डिसेबलमेंट हुआ तो वो आपका कवर अप नहीं होता। The injury results in the death or permanent disablement due to the worker was at the time of under the influence of drink or drugs. Okay, तो आप अगर अल्कोहल लेके काम कर रहे हैं, आप कोई ड्रग्स लेके काम कर रहे हैं और उस टाइम पे कोई एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, उसके लिए एम्प्लॉयर इज नॉट liable for that. Okay, the workers willfully disobey any order expressly given by ensuring safety. For example, आपको कोई ऑन साइट के लिए हमने सेफ्टी रूल्स बताया है, कुछ नॉर्म्स बताए हैं और आप उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो भी आपका जो है ये कंसिडर नहीं होगा। ओके, द वर्कर्स willfully remove any safety device which he knows would harm। ओके, तो कंपनी ने कोई सेफ्टी डिवाइस लगा रखा है, सेफ्टी प्रोसीजर्स लगा रखे हैं, उसके बाद भी वर्कर उसको रिमूव करता है एट द टाइम ऑफ वर्क, तो उसको भी हम कंसिडर नहीं करते। ओके, the contractual employment, if any employer takes the help of contractor in order to engage some workmen who are injured and are entitled to compensate for the principals. When the principals is held liable for the compensation, he shall be entitled to be indem- indemnified by the contractor. Okay, so contractual employees को हम usually cover up नहीं करते। Okay? Contracting outside, any contract where the workers requires the right of compensation from the employer for personal injury arising out of and in course of employment will be nullified and void। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप थर्ड पार्टी पेरोल पे हैं तो आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर से अगर कांटेक्ट करके उसको बोलेंगे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो वो नलिफाई हो जाएगा। एम्प्लॉयर कैन नॉट यूजुअली यूज इट एज कैन नॉट यूज इट एज अ डिफेंस। ओके, यूजुअली जो है एम्प्लॉयर इसको डिफेंस के तौर पे यूज नहीं कर सकता है। हम उसमें भी देयर आर सर्टेन क्लॉज इन थिंग्स इन दैट इफ यू गो वी नीड टू चेक कि क्या कंडीशन है क्या नहीं। if there is certain major happens and company is at fault for XYZ safety reasons, in that scenario employer has to pay, okay, the compensation. Okay, authorities under the act 1931, these sections provides the appointment of the commissions for the enforcement of the provision of the act. Section 20, authorities of the state government to appoint the commissioner under the act. Okay, so these are the basic things. Okay, for this act, and we have covered majorly related to this act. Any doubts, any queries related to this act? Any doubts, any queries related to this act, guys? Now, one thing we need to understand, I told you the occupational diseases. So the occupational diseases are certain categories of diseases where the workers employed in certain types of occupation and exposed to the risk of certain diseases which are peculiar or inherited to those occupations. Okay, तो particularly वो occupation की वजह से आपको वो disease condition हो या आप उससे सफर करते हैं वो आपका वर्कमैन कंपनसेशन में इंक्लूडेड होता है। ओके, सो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या डिजीजेस होती हैं।
So the occupational disease have been categorized in part A, B, C of Schedule 3. The employer is liable to pay the compensation when the workman contracts any diseases specified in part B while in service for the continuous period of 6 months under one employer. The period of service under any other employer in same kind of employment shall not be included. Okay. So for example, पहले आप किसी और के लिए काम कर रहे थे इसी फील्ड में और फिर आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में और आप तब क्लेम कर रहे हैं इसको तो वो कंसिडर नहीं होगा. आप इस एम्प्लॉयर के अंडर 6 मंथ्स काम कर रहे हैं और तब वो डिजीज कंडीशन अराइज होती है. इन दैट सिनेरियो वी विल पे द कंपनसेशन. ओके. Other than this, when the workman contracts any specific disease in Part C, while he has been in continuous service for a specific period, whether under one or more employees, okay? So the proportion of compensation is payable by all employees, okay? So for example, अब क्या कहते हैं कि आप दोनों एम्प्लॉयज की वजह से सेम इंडस्ट्री में काम करा और आपको डिजीज कंडीशन हो जाएगी तो उसमें हम आपको देखते हैं कि किस कंपनी में आपने ज्यादा काम किया कितने ड्यूरेशन से वो डिजीज है और कितना अमाउंट कौन पे करेगा. सो बोथ ऑफ द एम्प्लॉयर्स और मल्टीपल एम्प्लॉयर्स जो भी हैं उनको मिल करके पे करना पड़ेगा. ओके. If the employer has, after cessation of that service, contracted any disease specific in Part B or Part C as an occupational disease peculiar to the employment, and that such disease arises out of employment, the contraction of the disease shall be deemed to be the injury by accident within the meaning of Act. Okay. तो ये आपका बेसिक है. एक्सीडेंट रिपोर्ट्स क्या कैसे बनती है क्या होती है इसके अलावा यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन द एक्सीडेंट रिजल्ट्स इन डेथ और सीरियस बॉडी इंजरी द एम्प्लॉयर शुड सेंड अ रिपोर्ट टू द कमिश्नर. ओके. जो भी एम्प्लॉयर है उसको रिपोर्ट सेंड करनी पड़ती है कमिश्नर को विद इन द 7 डेज. आपका 7 डेज ऑफ एक्सीडेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म. इसका भी एक फॉर्मेट होता है जो गवर्नमेंट ने आपको ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर रखा है हर एक इंडस्ट्री को. उनको उसी फॉर्मेट में जो है आपको रिपोर्ट बना के भेजनी होती है गिविंग द सर्कमस्टांसेस कि क्या हुआ क्यों हुआ और कैसे ये डेथ हुई एंड सीरियसली बॉडी इंजरीज क्या क्या थी. एवरीथिंग शुड बी मेंशन. ओके. So the notice of incident should be sent to the commissioner by the concerned employee as soon as the participle after. Therefore, the notice should contain such as the name, address, and the person of the injury, date, and cause of accident. Okay, so जो भी person था, employee था, whatever he has suffered or whatever she has suffered, वो इसका notice भेजेंगे. Okay, once they send the notice to the commission, name, injury, and every report के साथ, फिर a copy of notice should be sent to the statement he was employed. Okay. So उनको भी भेजना पड़ेगा जहाँ पे वो employed था एक copy. The notice of accident may be served either personally or registered by post or by means of any entry notice book maintained by the employer. अब जो ये है कॉपी ऑफ नोटिस जो हमने एम्प्लॉयर को भेजा है वो नोटिस जो है उसको एक्सीडेंट को वो आइदर पर्सनली सर्व करे रजिस्टर कॉपी भेजे अपनी जो भी करे या उसको नोटिस बुक को मेंटेन करके एम्प्लॉयर को मेंटेन करके रखनी पड़ती है. ओके. सो अगर आपका कोई भी एक्सीडेंट सर्विसेज होता है या कोई भी ऑन साइड एक्सीडेंट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को उसका एक कॉपी बना के रखना पड़ता है. उनको अपना एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ता है एंड दे हैव टू इन्वेस्टिगेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो आपको वो नोटिस जब भी आपका जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी आएगी वो उस बुक को चेक करेगी कि पर ईयर में कितना एक्सीडेंट हो रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है व्हाट इज द रीजन व्हाट इज द सेफ्टी रीजन ये सब चेक किया जाता है. ओके. अब आपने क्लेम तो कर दिया कि आपको ऑन साइट हुआ अब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा. द एम्प्लॉयर मस्ट गेट कंसर्न वर्कमैन एग्जामिन बाय द क्वालिफाइड. अब फॉर एग्जांपल आपका ऑन साइट इंजरी हुआ आपने एक कमिश्नर को नोटिस भेज दिया एक जो है या तो एम्प्लॉय खुद करेगा या ऑर्गेनाइजेशन करेगा. ऑर्गेनाइजेशन अगर करता है तो वो क्या करेगा कि कंपनसेशन दे देगा सब कुछ कर देगा.
और अपने रिकॉर्ड में मेंटेन कर लेता है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर फेल हो जाता है तो एम्प्लॉय के पास ये बेनिफिट होता है कि वो कोर्ट में employer may be concerned the workman examine within the medical practitioner 3 दिन के अंदर जो है आपको रिसीव हो जाना चाहिए नोटिस ऑफ एक्सीडेंट एंड एम्प्लॉय मस्ट बी प्रेजेंट हिमसेल्फ एग्जामिनेशन उसको करवाना चाहिए वहां पे जाकर के एंड ही शैल लूजेस हिज राइट टू बी कंपनसेशन। अगर 3 दिन के अंदर वो नहीं करवाता है या कोई भी एक्शन नहीं लेता है विद इन 3 डेज मेडिकल एग्जामिनेशन का तो उसको कंपनसेशन को क्लेम करने का जो राइट है वो लूज हो जाता है। And failure of employer to have a workman excellent medical examine does not debar him for charging the medical certificate produced by the workman. Okay, so अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपका एग्जामिनेशन नहीं करवाता है, आप जाके करवाते हैं और उसको चैलेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर प्रॉपर तो उस कंडीशन में उसको जो है जो भी सेक्शन के अकॉर्डिंग जितना भी अमाउंट ऑफ आपका पेमेंट का बनेगा ही हैज टू पे। ओके, सो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इफ यू वांट आई विल ऐड सर्टेन एग्जांपल्स फॉर दैट रीजन। ओके, सो आप ये क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल विद टाइम टू टाइम जो है इन पॉलिसीज में भी हम चेंजेस करते रहते हैं। ओके, कि क्या जरूरत है क्या नहीं। सो रिविजन ऑफ दीज पॉलिसीज विल बी टेकिंग प्लेस ऑल्सो। So there are certain revisions of these policy has been taken in 2006 and other. So basic layout will be same, but आपका because आपका पेमेंट में चेंजेस हो रहा है, ये चेंजेस हो रहा है, तो हम उनके हिसाब से ये जो है पॉलिसीज को जो 1923 का एक्ट है उसको हमने 2006 में और लेटर ऑन 2017-19 में रिवाइज किया है। ओके, so with this we completed this act. If you had any doubts or queries you can ask.